Okay, so hello everyone. So today we are starting this introduction of list in Python revision. Okay, so before starting, students, let's see what is this list. So this is a sequence that we will discuss. First is list. We have tuples. We have dictionary in Python. We have sets. We have string. Okay. So first of all, we will see this. What is list? So a list is a collection of values or an ordered sequence of values item. Okay, basically, order is followed in a list that we will see through ideally, practically also. The items in the list can be of any data type. Any data type means in list we can take any integer, we can take any string data type, we can take any character. Okay, so that we will see. So first is this list are enclosed in. Okay, students. So students list are enclosed in square brackets. Okay, so if we will discuss about the list you have to enclose this in square bracket. So first topic we have in the list is, so what is list? It enclosed in a square bracket, you can see, and like this you can declare or create a list. So lists are basically created using a comma. Comma means if the first is my name, you can see students. So first is my name and this is a character. Kuldeep is a character. So you have to take this in quotes and after that comma, then one. One is an integer. Okay, students. So you have to use comma. After that, you have to use this square brackets for declaring the list. Okay, so this is all about declaring the list. So by defining this, basically you can take it inside any variable also. So let's see what is this mutable. Okay, we have discussed in starting also what is this mutable and immutable. So the mutable means if you can change any value in place. Okay, if we can change a value in the list, that means it is mutable. That I will show you with the help of ideally students. So let's declare one list. I'm opening this ideally integrated development learning environment. Okay, students. So this I'm using Python ideally. So let's start now. I think you all can see now. Okay, so you can see students. So first of all, I'm declaring this A list 1, 2, 3, 4, 5. It contains only integers. If I will print A, okay, so this is my list. Now you can see this is my list. Now students, if I do A of 0, so indexing in the list start from 0, 0, 1, 0, 0 इंडेक्स पे 1 है हमारा एंड 1 इंडेक्स पे 2 है लाइक दिस इंडेक्सिंग होती है लिस्ट में और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है -1 -2 -3 -1 वी हैव ऑन 5 सो ए के जीरो को अगर मैं स्टूडेंट्स -1 करता हूँ लेट्स सी मतलब ए के जीरो में ए का जीरो मींस दैट 1 इंस्टेड ऑफ 1 आई वांट -1 लेट्स सी क्या ये चेंज होता है इज द लिस्ट म्यूटेबल now you can see students the value of this minus you can say a0 is 1 now it is -1 it means that it shows that this list is mutable we can change the value in place I hope it is clear to everyone. Let's start students. Let's what are the types of list we have in Python. We have this type. First type we have is empty list. Empty list means if any list has no value in that list, basically you can see example I have given. A is a list, it does not contain any value. Okay, so let's see with the help of example also students. Now if I declare like this A, this is my empty list. If I print A students now you can see this is my empty list. Okay, so like this, you can also declare this empty list. Now next type we have student long list. Okay, any list basically that contains elements. Any element that can contain students can contain 3 elements. It can contain 10 elements. Okay, and all it comes in long list. So you can see the note is there. We can add multiple data types in list. In list, I can add string also. Let's see one more example of the string or you can say integer that I'm adding in my list. Now one is my integer. Now you can see Karan is a name that I am using 4, 5, 6, 7. Okay, so now you can see this data type in list you can use different data types in a list. Now you can print this B also by using this print function. So student this is all about the long list. Nested list we have nested list होता है list के अंदर list inside list. How you can access this? Now you can see the example list one is 5, 6 and 1, 2, 3. What is this 1, 2, 3 students 0, 1, 3 तो 3 जो इंडेक्स पे हमारी 1, 2, 3 नंबर की लिस्ट है I will show you I will show you what is this nested list what is this list inside the list क्या कहना चाह रहा हूँ let's see let's file new मैंने ले लिया okay I'm taking students one okay let me directly show you ideally so see I'm taking 1 2 अब
थर्ड एलिमेंट जो है लिस्ट के अंदर लिस्ट, दैट इज आई एम टेकिंग 3 4. ओके, देन आफ्टर दैट आई एम टेकिंग 5. ओके, नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, 0th इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, और आपका जो 2 इंडेक्स पे है वो 3 4 एलिमेंट है, क्योंकि खुद लिस्ट है जो लिस्ट के अंदर लिस्ट है. नाउ लेट्स सी इफ आई डू दिस C of 0 1 2. Okay, now you can see C of 2 is 0 1 2, that is 3 and 4. So this is a nested list, list के अंदर list. And how you can access this directly, you give this number also. अगर आप -1 देते हैं तो last element, because this is backward indexing. If I do this -2, now what will happen? 3 or 4. So please remember that this is also very important. Okay, C का -3, so आ गया 2. पीछे से indexing चलेगी और आगे से 0 से. ठीक है. Now this is all about the list, students. Now after nested list, next we have is creating a list from existing sequence. How you can create your list? Okay, if any name is given and if anything you want to keep inside that function, we have that list function. You can use this list function, students, and inside that list function you can give your name. You can give any integer also. Let's see example. Okay, so if I'm using this list function, list one I'm declaring, and I'm writing like this, that is, I'm writing my name first, full name I'm writing. Let's see what will happen. Okay, so if after that I have to print list one also, because list one के अंदर list के, now you can see this Kuldeep Rohila is converted into KULDEEP. After that space आपने दिया था उसका भी एक वो बन गया है. Okay, now you can see this whole string is converted into list now. So this is a list function, students. I hope everybody is clear with it. After that, create a list, assign your date of birth in a variable in a string. Now you can see, you can also do like this. D of date of birth may 08, 07, whatever your date of birth is. And after that, let's see what will happen. Let's see. DOB में मैं date of birth दे देता हूँ 09081995. Whatever date of birth is, you can use. And after that, what? Because I have to use the list function, जो मैंने use नहीं किया. मैं list function का use करके आपको बताता हूँ. What will happen if I use the list function in the date? Now let's see. 995. Now if I print DOB, students, now let's see what will happen. Now you can see this whole is converted into list. So this is the use of list function. You can convert your string, you can convert your characters into list. Now creating a list from user input. Okay, so like this we have used this int input enter value. आप list directly convert कर सकते हो इनकी जगह. ठीक है, this is also used. Input आप जो भी आप enter value करवाएंगे वो list में convert हो जाएगा. This you can also use. Now let's see, students, this we have seen. ये देखो, list one I have created using the list function. list का यूज करके मैं कुलदीप को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ. अब आप देखो, अगर मैं इस लिस्ट को कॉपी करता हूँ, now let's see, taking file new, now new list I am taking, students, that is list 1 1 2 3 4 5 6. Now what I am doing, list 1 equal to list 2, so I am copying my list 1 inside this list 2 function. Okay, this is not a function, students. Now please remember this. If I have created one list and if I want to copy that list, I can also do that in a variable. Now let's see what will happen after that. Now if I want to print this list 2, let's print list 1 as well as list 2. Okay, so that will definitely show you difference practically. After that, if I do this list 2, देखो जो list 1 के एलिमेंट है वो list 2 में आ चुकी है, पूरी लिस्ट आ चुकी है हमारे पास. If I do this list 2 का 3 एलिमेंट, now let's see what will happen. So let's run this and save this also. Okay, saving. This is all about list, introduction of list, class 12th, sorry, class 11th we are doing, students. So now let's make a folder here, list revision. You can also make for your reference so that you can learn it easily. आप भी बना सकते हो और सेव कर सकते हो प्रोग्राम्स को. Now 1.py I am using. अब आप देखना, now you can see list 2 is not defined. Okay, so I have created the list 1, students. So it is showing that list 2 is not defined. Let's see. Okay, we have not defined this list. So you can see here list 1 equal to list, because हमें list में जब convert करोगे आप इसको
whatever the list you have taken, so list 2 में आप list 1 को डाल सकते हो. Okay, so this is here, print list 2. If I am doing like this, so let's see what is the error in this. List 1 में मैंने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया है. List 1 में, अच्छा list 2 में list 1 देना था ना. So let's see what will happen now. It will run or not. Now you can see students. Okay, तो list 2 के अंदर ये बात आपको ध्यान रखनी होगी. That is a good error that we have seen. Okay, and we have achieved the success also. So like this, you will get the error and you will achieve the success easily. Okay, students. तो list 2 में मैंने list 1 डाला और देखो list 2 के जो third element था, आप ऐसे इसको access भी कर सकते हो. So let's see and move forward now. So we have seen this accessing list element. How we can access the element, students? We all have seen this. आप list create करो. Indexing, we are starting from this 0 1 2 3 4 and backward indexing -1 -2 -3 -4. Please remember this because this is very important for an exam also, students. Now how to traverse a list, how we can use a for loop if we are using a list. So now let's see. Now let's just simple example, students, and then I will show you how you can use this. ये देखो, list 1 I am creating 1 2 3 4 5 6. So for I in list 1, okay, after that what I can do for I in list 1 means that in I each element is coming. So if I print I, then I got the answer. For I in list 1 means list 1 का पहला element 1 है, y में आ रहा है, फिर 2 आएगा. Like this loop will run. Okay, let me show you practically first. पहले इसका आउटपुट आपको मैं दिखाता हूँ. So same I have saved this in list revision. ठीक है, उसमें मैं सेव कर लेता हूँ. Here it is. So 2.py. Okay, now you can see first, second, third, because I have used the print function there. So पहले 1 number access होगा in I, फिर after that 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6. Okay, students, so this is all about the accessing the element in the list. Now you all can do this by using the for loop. Find the sum of all the elements. Okay, if you want to find the sum, you can use the sum function. Okay, directly you can use the sum function. Apart from this, if you don't want to use the sum function, students, आप कैसे यूज करेंगे? आप सम को 0 ले लेंगे पहले. ओके, फिर जो भी एलिमेंट होंगे सम इक्वल टू सम प्लस लिस्ट 1. ओके, प्लीज ट्राई दिस. दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू ऑल कैन डू दिस. ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन द सम को 0 लो और फॉर लूप रन करो. फॉर लूप अभी हमने देखा और उसको सम करो. Okay, next is very important how you can use the range function. So before using the range function, so now let's see how we can use in this list. Okay, if I have made any list, student, list 1 I made, now you can see 2 4 6 8 and 10. First of all, I'm using this length function for finding my list length. Okay, then I'm using for I in range. In range I'm giving the a that is your length function. ओके, दैट इज द लेंथ. अभी लेंथ यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5 लेंथ है, तो रेंज 5 तक चलेगा, यानी कि 0 से 4 तक की लूप चलेगा. ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है. इफ आई प्रिंट आई, अब सोचो प्रिंट जब मैं आई करूंगा सो रेंज में कितना था 0, यानी कि 1 2 3 4 5 था, तो 5 यानी कि रेंज हमेशा 0 से 4 तक चलता है. तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 0 1 2 3 4. तो रेंज फंक्शन. लेकिन मुझे तो अब क्या चाहिए था यहाँ पे? आई वांट द वैल्यूज. सो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे? लिस्ट 1 का आई. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. लिस्ट 1 का आई. सो ये बात ध्यान रखना, दिस इज द यूज ऑफ दिस रेंज फंक्शन. अगर वैल्यूज चाहिए तो लिस्ट 1 का आई इंडेक्स यहाँ पे शो कर रहा है. ठीक है, लेट मी सेव इट विद. अब देखना, अब नाउ इट विल गिव यू द वैल्यूज ओनली. ये देखो 2 4 6 8 10. अगर मैं लिस्ट 1 हटा दूं, अगर सिर्फ आई करूंगा, सो ओनली indexing will come. I hope it is clear to everyone. Okay, please remember this. This is very important. Okay, students. Now you can see the indexing 0 1 2 3 4. So now after traversing, next you can also try this code, that is count the total number of element. We have already discussed. Now what is aliasing, student? So variable that refers to an object, that is called aliasing. What it means, I've declared one list, that is list 1 1 2 3 4 5. अब list 2 के अंदर मैंने list 1 के एलिमेंट डाले हैं. ठीक है,
तो जब आप लिस्ट टू में आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट वन के सारे एलिमेंट लिस्ट टू में आ गए, ओके, सो ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप लिस्ट टू में चेंज करोगे स्टूडेंट, सो इट विल ऑटोमेटिकली चेंज इन लिस्ट टू। ओके, लेट्स सी, लेट्स टेक दिस कोड डायरेक्टली, ओके, लेट्स चेक इट फास्ट इफ इट इज रनिंग और नॉट। ये देखो लिस्ट वन हमारे पास है, लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन आई हैव डिक्लेयर, आई थिंक दिस इज कैपिटल हियर, लिस्ट वन। प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट वन को, प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट टू को। नाउ लेट्स रन दिस कोड। ओके ओके, प्रिंट में स्मॉल देंगे हम, आई कैन सी पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी 5 2 3 4 5, 5 2 3 4 5, क्यों? ये लिस्ट टू का जो जीरोथ एलिमेंट था दैट इज द फर्स्ट इंडेक्सिंग, अब उसमें क्या आ गया, वन की जगह फाइव आ गया है। अब दोनों लिस्ट में देखो चेंजेस आ गए हैं, जो लिस्ट वन में भी, जो लिस्ट टू में अगर जो चेंज किया आपने, अगर दोनों लिस्ट बराबर थी तो लिस्ट वन में भी वो चीज अपडेट हो गई। अब जीरो एलिमेंट देखो, ठीक है, this is a good thing that if you want to update the value in one, after updating you want that same value update in the first thing, then you can use this aliasing option. After the aliasing, next we have this, okay, we have seen this aliasing comparing list. You can also compare the list, students. If you want to compare this two list, you can use this, that पहला एलिमेंट आप कंपेयर करो। अब लिस्ट वन में देखो, लिस्ट वन इक्वल टू 1, 2 एंड लिस्ट टू इक्वल टू 3, 4। ओके, जस्ट गिव मी 1 second। Okay, we have seen this all traversing a list। ओके, वी हैव स्टार्टेड दिस कंपेयरिंग स्टूडेंट्स। अब देखो, आप कंपेयरिंग में लिस्ट वन में हमारे पास 1 2 एलिमेंट है, लिस्ट टू में 3 4 है। अब आप बताओ, लिस्ट इफ आई डू लाइक दिस प्रिंट लिस्ट वन इज ग्रेटर देन लिस्ट टू, तो ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ओके, नाउ हम देख सकते हैं फर्स्ट, यू कैन सी फर्स्ट एलिमेंट इज वन, क्या वन थ्री से बड़ा है? सो दैट्स व्हाई दिस रिटर्न फॉल्स। नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत है, पहला एलिमेंट पहले से कंपेयर करो। इफ अगर पहला एलिमेंट फॉल्स हो जाता है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, लिस्ट वन इक्वल टू 1, 2, list 2 equal to 1, 4। okay, so it will print, मैंने लिखा print list 1 is greater than list 2, so सर पहला एलिमेंट तो सेम है, फिर दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करेगा, क्या 2 4 से बड़ा है? now you can see it is false, that's why it returned false। like this you can compare, students, please practice this, but you cannot compare a string with a number, please remember this। list 1 that is a string, first element is a string, and list 2 में first element is a number, you cannot compare, it's not possible to compare the list with a list which where first element is a string as well as with the numbers। okay, so please, but we can compare this, abc को हम बड़े ए से कैपिटल ए से कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास स्काई वैल्यू उनकी होती है। ओके, सो वी हैव स्मॉल ए दैट इज, लेट्स सी एग्जांपल, मैं इसको आपको, दिस इज अ गुड एग्जांपल दैट वी शुड डू। So I'm taking one example, students. List I have declared that is A B, okay, and that is A B C. Any list I have taken. Now list two I have taken, students, now. So this is C A and V B C. Whatever, I'm just taking the list. Now you can see I'm writing print. ये आपको ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा if you are writing list one is greater than list two। नाउ फर्स्ट इट विल कंपेयर, क्या जो आपका लिस्ट का ए एलिमेंट है, ए दैट हैज अ वैल्यू 97, और उसके बाद आपको पता है स्काई वैल्यू ए की, स्मॉल ए की 97 होती है, तो सी की तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है, सी की तो ऑब्वियसली बात है 98 99, ए बी सी ऐसे करके सी की वैल्यू ज़्यादा है। सो लेट्स सी, फिर आपको कैपिटल भी करके दिखाते हैं। फर्स्ट सी दिस, सो इट विल रिटर्न, क्या लिस्ट वन ए से बड़ा है? नो, दैट्स विल रिटर्न फॉल्स। 5 डॉट, तो ट्रू और फॉल्स आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, नाउ यू कैन सी इट इज रिटर्निंग फॉल्स। अगर मैं इसको ए कर दूं, कैपिटल ए, अब बताओ कैपिटल ए दैट इज लिस्ट वन ए, स्मॉल ए वैल्यू इज, सो स्काई वैल्यू कंपेयर करना, ऐसे मत सोचना कि स्मॉल ए जो है बड़ा है, नो, स्मॉल ए छोटा है, बड़ा से मतलब नहीं आपको, यू हैव टू कंपेयर विद द हेल्प ऑफ स्काई वैल्यू ओनली। सो ए, स्मॉल ए हैव अ स्काई वैल्यू दैट इज 97 एंड दिस कैपिटल ए हैव अ वैल्यू दैट इज 65, दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न डेफिनेटली ट्रू। ओके, तो आप देख सकते हो इट विल शो यू ट्रू, ये देखो अब आपको ट्रू ये वैल्यू दे देगा। दिस इज ऑल अबाउट द कंपेयरिंग द लिस्ट। नाउ लेट्स सी द ऑपरेशंस ऑन लिस्ट।
आप लिस्ट पे क्या ऑपरेशंस कर सकते हो? दीज ऑपरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑपरेशन इज कंकैटिनेशन. You can concatenate two lists. First list 1 is given 10, 20, 30, like this. List 2 is given 40, 50, 60. You can basically combine two lists 10, 20, 30 by using this concatenation operator. So plus operator is used. ठीक है, आप इसको लिखोगे Python code में, then it will run. Okay. Now let's see in a fast way, because we are devising is this. Okay, you can try this. Just very easy codes you can write, but you have to practice as students. So it's replicate the list for a specified number of time. अगर लिस्ट वन मेंशन है 10, 20, 30, 40, 50, अगर मैं लिखता हूँ लिस्ट वन स्टार 4, तो मेरी लिस्ट जो है लिस्ट वन 4 बार आ जाएगी. 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, like this it will print. ठीक है. सो लिस्ट वन के साथ जब भी आपको रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करना है, यू हैव टू गिव द नंबर. ऐसे नहीं कर सकते हो आप लिस्ट वन स्टार लिस्ट वन. दैट इज नॉट पॉसिबल. दिस इज अ एरर. नाउ नेक्स्ट वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लिस्ट, दैट इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर. स्टूडेंट्स, इन या नॉट इन, क्या जो पर्टिकुलर एलिमेंट है अगर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है लिस्ट में, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स. ओके, सो नाउ लेट्स सी. Let's see in ideally. Okay, so I've declared this capital A list, that is 1 2 3 4 5. So 1 in A. ठीक है, क्या 1 A में है? You can see it is returning true. Okay, this in operator is used to find any element in a list, student. This is a simple thing. Okay, now not in, मैं लिखूं यहाँ पे क्या 2 not in A. क्या 2 not in A है? क्या नहीं है? नहीं सर, this is false है. तो okay, now please remember this. These are all two operators that we have discussed. That is membership operator. Please remember the name. Now next is indexing. We have already discussed this. Okay, आपको first element discuss करना है. So this is 0 and backward indexing starts from -1. Now students, slicing is also very very important. Okay, slicing में बहुत important हो जाता है. अब देखो लिस्ट मैंने एक डिक्लेयर की है 1 2 3 4 5. अगर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स कुछ नहीं दे रहा हूँ, सो इट विल गिव मी द होल लिस्ट. को स्टार्टिंग लेके चलेगा 0 से लेके एंडिंग तक. ओके, ऐसे अगर मैं 0 से 2 तक दे रहा हूँ, सो 0 और फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा. हमेशा एक कम जाता है, लास्ट से एक कम. ठीक है. और इसमें क्या है सर, प्रिंट लिस्ट में 0 से स्टार्ट होगा, दैट इज 0 1. ओके, एंड देन 2. और ये जो आपको दिख रहा है थर्ड, दैट इज अ स्टेप वैल्यू. 0 स्टार्ट वैल्यू, थर्ड 3 is the end value and 1 is a step value. ये सब मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट. दिस इज द स्लाइसिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये देखो, स्टार्टिंग में आपने कुछ नहीं दिया है, सो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा? -1 तक, यानी कि -1 ये होता है 5 तक. तो मेरी लिस्ट पूरी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है. तो लेट्स सी सम एग्जांपल स्टूडेंट्स इन स्लाइसिंग आल्सो. ये देखो, लेट्स टेक वन लिस्ट दैट इज S 1 2 3 4 5. अब मैं A के अंदर वो स्लाइसिंग कर लेता हूँ. ओके, सो S के अंदर मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ. सो फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स में इसमें अगर 0 दे रहा हूँ, कॉलन. ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स. यू हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दिस ओनली. कॉलन, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू मैं 2 तक जाना चाह रहा हूँ, 0 1 2, और स्टेप मैं दे देता हूँ 1. मतलब अगर आप नहीं भी दोगे डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप. लेट मी शो यू फर्स्ट दिस. ओके, इफ आई प्रिंट A, अब आप बताना मुझे व्हाट विल बी द आउटपुट. नाउ यू कैन सी 1 and 2, बिकॉज़ 0 2 से हमेशा एक कम जाता है रेंज. ठीक है, हमेशा जो स्लाइसिंग होती है, इफ आई गिव दिस स्लाइसिंग 0 colon 2, so it will go up to 0 or 1. ठीक है, ये 0 1 तक जाएगा. नाउ यू कैन सी दिस. ओके, so like this, if I do this S 0 colon -1, अब चेक करें. now if I print A, now you can see 0 से लेके, यानी कि 0 1 2 3 4 -1 तक 5 तक क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज एक कम तक जाता है. ध्यान रखना है 4 तक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, 0 से लेकर अगर मैं -5 राइटिंग दिस -1, नाउ स्टूडेंट इट विल गोज लेस देन द लास्ट वैल्यू. ओके, सो लाइक दिस यू कैन यूज दिस. नाउ इफ आई एम यूजिंग दिस, 0 से स्टार्ट मैं करता हूँ. सो आई एम राइटिंग 3 तक मुझे जाना है. स्टेप वैल्यू अगर मैं 2 देता हूँ, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. स्टेप वैल्यू मैंने बढ़ा दी. अगर मैं 2 दूंगा तो एक छोड़ के अगला वैल्यू जो है लेगा. नाउ यू कैन सी 0 फर्स्ट एलिमेंट इज दैट इज 1, फिर इसने 3 तक जाना है, 0 1 2 3, फिर दूसरा एलिमेंट छोड़ दिया, तीसरा 3 उसने प्रिंट कर दिया. उसके बाद तो लास्ट वैल्यू यहीं तक जाना था. जहां तक जाना है वहीं तक एंडिंग होगी. ठीक है, स्टेप वैल्यू क्या करती है कि स्टेप जितने भी आप 3 दोगे तो 2 को छोड़ के आगे बढ़ जाएगी. ओके, so this is the use of this slicing function. I hope you understand this. Next is the append function. ये देखो, append, this is append methods adds an element in the list at the end. End में element को कुछ add अगर आपको करना है,
इफ यू हैव एनी लिस्ट एंड इफ यू वांट टू अपेंड एनी एलिमेंट तो लिस्ट डॉट अपेंड आप यूज कर सकते हो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिक्लेयर वन लिस्ट दैट इज एबीसीडी. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दिस लिस्ट डॉट अपेंड ई. ये देखो, सिंपली वी कैन डू दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो. अब इसमें अपेंड कर दें. नाउ इफ आई डिक्लेयर वन मोर लिस्ट, लिस्ट वन 1 2 3 4 5. ओके, अब मैं यहाँ कर देता हूँ लिस्ट वन डॉट अपेंड 9. इसमें मैं 9 एलिमेंट अपेंड करना चाह रहा हूँ. Now if I print list one, now you can see at the end that value comes. That means that at the end वो value add हो जाएगी. So this is the use of this append function. This program you all can see. Okay, I hope you can discuss this. इसका ले सकते हो. You can pause the video and you can see. Extend method adds one list at the end of the another. If you want to add one list after the another list, you can use this extend function. ठीक है. सो एक्सटेंड याद रखना. आप एक्सटेंड यूज होता है अपेंड इज फॉर एलिमेंट, एलिमेंट ऐड करने के लिए, और लिस्ट के लिस्ट दो लिस्ट को ऐड करने के लिए के पीछे एक वी आर यूजिंग द एक्सटेंड फंक्शन. नेक्स्ट वी हैव इंसर्ट फंक्शन. इंसर्ट मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट पर्टिकुलर इंडेक्स. अब मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई एलिमेंट ऐड करना है, वो भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स. ये देखो, इसके लिए हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन होता है. नाउ लेट्स सी. नाउ वी हैव दिस लिस्ट वन. अगर मुझे लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, now you can see in index, first of all you have to give one पे मुझे add करना है, that is 34. now let's see if I print list one. now you will realize the difference, students. now you will see. Okay, really sorry, let me do this again. Okay, so now you can see 0 first index पे now you can see the value 34 comes. It means that index that is an insert से आप use कर सकते हो if you want to add any element at a particular index. reverse method reverse the element in list without creating a new list. नई लिस्ट नहीं बनती है, उसी लिस्ट में रिवर्स कर देता है. ठीक है, तो लिस्ट वन आई हैव क्रिएटेड, आप लिस्ट वन डॉट रिवर्स लिखेंगे, प्रिंट करेंगे तो उसी लिस्ट में रिवर्स होगा, कोई नई लिस्ट नहीं बनती है. What now, what is the index function? Index function, students, return a index of that value. Now index function is used to get the index of the first match item. अगर बहुत सारे टू आपने दिए स्टूडेंट तो फर्स्ट टू का जो इंडेक्स होगा आपको मिल जाएगा. आपको वैल्यू देनी होगी लिस्ट में, जो भी वैल्यू आप लिस्ट वन डॉट इंडेक्स करने देंगे उसका आपको इंडेक्स मिल जाएगा. अब जो वैल्यूज में नहीं है तो क्या लिखेगा आपको, वैल्यू एरर दैट 7 इज नॉट इन द लिस्ट. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, अपडेटिंग अ वैल्यू, आप वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो. दिस वी हैव सीन. ए का 0 लिख दो 25, so इसमें 25 आ जाएगा. काउंट फंक्शन, लिस्ट डॉट काउंट. इफ यू वांट टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइटम्स इन एन एलिमेंट occurs in a list, तो आप list dot count में 7 लिखोगे, 7 जितनी बार आना होगा. if in a list it 5 times तो 5 times वो शो हो जाएगा. आप देख सकते हो उसमें. और लेंथ फंक्शन से लिस्ट की लेंथ पता चलती है. ठीक है, ये सब फंक्शंस आप एक बार देखना स्टूडेंट्स. दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. ओके, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं शॉर्ट फंक्शन पे. ठीक है, शॉर्टिंग. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस शॉर्ट फंक्शन. Okay, so I have already this list one, so I'm doing this list one dot short. वो आप देख सकते हो list one dot short जब मैंने किया. so I'm reading the definition. student, this function is used to sort the items in ascending or descending. ascending में तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 9 34, ये ascending में हो गया, छोटे से बड़े में. अगर आपको इसको डिसेंडिंग में करना है, सो लिस्ट वन डॉट शॉर्ट पैकेट में आपको देना होगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू. नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ. ओके, लेट मी चेक दिस. सो लिस्ट वन डॉट शॉर्ट, नाउ यू कैन सी लिस्ट वन डॉट रिवर्स इक्वल टू ट्रू देना है. ठीक है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू देना है. लिस्ट वन डॉट शॉर्ट इक्वल टू, ओके, ट्रू को भी देना होगा. नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स, लिस्ट वन डॉट short reverse equal to tr. what happened here, list one dot short reverse equal to true, an integer is required, got type. Okay, we are giving the string. If you want to, this is an ascending order, we have done this. Okay, list one dot short. So let's take one more list, student, to understand this. 1 2 3 4. Okay, we have 23
45, then 22, 21. If I write this list2 dot short, that is okay, perfect. Then I print list1, list2, sorry. अब आपको ascending order में मिल जाएंगे एलिमेंट. If I want in descending order, what I should do? Let me check again. List2 dot short. आप देख सकते हो की इक्वल टू नन एंड रिवर्स इक्वल टू, देखो आपको रिवर्स में आपको डालना होगा, दैट इज इक्वल टू write it in capital. Let me check last time again. Short. You can see we are now, yes, now it's perfect. Okay. अब आप देख सकते हो, अगर अब आप प्रिंट करते हो स्टूडेंट, सो प्लीज रिमेंबर द सिंटेक्स आल्सो. ओके, sometime no problem, capital small will get an error and you have to correct this. Okay, so this is a descending order student, so now you can generate this reverse equal to true करके भी आप इसको यूज कर सकते हो. So after this next operation we have this short. क्लियर से क्या होगा, इफ यू वांट टू रिमूव ऑल द एलिमेंट इन द लिस्ट, सारे एलिमेंट आपको क्लियर करने हैं तो आप क्लियर कर सकते हो लिस्ट डॉट क्लियर करके. डिलीशन ऑपरेशन पे अब हम आ रहे हैं स्टूडेंट. सो पॉप, it removes the element from the specified index and return the element which is removed. देखो जो भी आप इंडेक्स इसमें पास करते हो स्टूडेंट्स, अगर मैंने लिस्ट वन डिक्लेयर करी ABCD एंड इफ आई राइट दिस लिस्ट वन डॉट पॉप टू, तो 0 1 2 यानी कि सी एलिमेंट जो रिमूव वो शो होता है. ये पॉप फंक्शन का यूज होता है. ओके, that whatever the index you have given, it returns you the element that have been deleted. Okay, so please remember. And what is the difference between this delete and pop? It removes a specified element from the list but does not return the delete. Delete कर देता है लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, but pop रिटर्न करता है. This is very important thing. Okay, ये देखो, let me do this here. ये कौन सी लिस्ट थी हमारी, लिस्ट टू. सो लिस्ट टू डॉट पॉप मैं कर देता हूँ उसमें से 1 नंबर का एलिमेंट. आप देखो इसमें रिटर्न करेगा आपको. नाउ कैन सी 23. अगर मैं डिलीट करता हूँ, ओके, अब मैं आपको डिलीट दिखा देता हूँ. नाउ इफ यू सी दिस डिलीट, so del list 0. Okay, simple. Del के साथ आप list 2 whatever the list is or whatever the element you want to delete, you can give 0. वो delete हो जाएगा, return नहीं होगा. आप देखो, now you see the difference. ये देखो, first element is deleted, that is 0th element. Okay, so like this is the difference between this pop and delete function. आप स्लाइसिंग के साथ भी डिलीट कर सकते हो. ओके, del list करके दे सकते हो 1 से 3 यानी कि 1 2 दो एलिमेंट जो है डिलीट हो जाएंगे. The remove method is used when we know the element but not the index. जब आपको एलिमेंट पता है लिस्ट में, इंडेक्स नहीं पता है कौन से इंडेक्स पे एलिमेंट है, बट आपको पता है कि 200 मेरा एलिमेंट लिस्ट में है, सो डायरेक्टली आप उस एलिमेंट को भी बाय यूजिंग द रिमूव मेथड यूज कर सकते हो. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज इंडेक्स. वी कैन यूज द इंडेक्स मेथड टू गेट द इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट. ओके, अगर मैं लिख दूंगा लिस्ट डॉट इंडेक्स, वी हैव सीन दिस. ओके, लिस्ट डॉट इंडेक्स 200, तो 200 जो है 0 फर्स्ट एलिमेंट पे है, यानी कि दैट द फर्स्ट इज द इंडेक्स ऑफ द 200. मैक्स और मिन आप यूज कर सकते हो मैक्सिमम एलिमेंट लिस्ट में, तो मैक्सिमम के साथ अंदर ब्रैकेट में आप लिस्ट दे दो, मिनिमम यूज कर लो. ओके, सो दिस इज द basically revision part that we have done. These are the questions that you all can practice. I am showing you one by one. You can pause the video and you can practice this. Okay, these are all the important questions, students. Okay, please practice this question, and that's all for today. So thank you so much everyone. Please practice this list.